Hello dear students, today I am going to solve few questions related to your second order derivative. These are the little different type questions. A given expression is there and you are to prove that find the particular expression. Prove this particular expression. Second order derivative means y2 plus y equal to 0. You are going to prove that y2 plus y equal to what? 0. So what is given? Y equal to 5 cos x minus 3 sin x. And you are to prove that y2 plus y equal to 0. That means you have to need to find second order derivative and then take left hand side and finally you get the result is 0, which is equal to right hand side. Okay, let us start with the that is our given condition. What is given? Given y equal to what? 5 cos x minus 3 sin x. Then what will be y1? y1 is equal to d dx of 5 cos x minus 3 sin x. Okay, so इसको डेरिवेटिव करेंगे तो सिंपल सा डेरिवेटिव है. cos x का डेरिवेटिव माइनस होगा तो माइनस 5 sin x होगा एंड sin x का डेरिवेटिव cos x है तो माइनस 3 cos x. सिंपल डेरिवेटिव. ओके, देन अगेन डेरिवेटिव y2 means d dx of y1. Very simple. d dx of what? y1 is what? Minus 5 sin x minus 3 cos x. If you do the derivative, sin x का derivative क्या होगा? cos x. तो ये भी बन जाएगा 5 cos x and cos x का derivative क्या हो रहा है? The cos x का derivative is what? Minus sin x, minus minus है plus, so plus 3 sin x. Okay, this is about what? y2. This is about what? y1. Okay. Now take the expression, this expression, left hand side is equal to d2y upon dx2 plus y, and which is equal to, we can write y2 plus y, y2 plus y. What is the value of y2? y2 is what? Minus 5 cos x plus 3 sin x. And what is the value of, that is our y originally, it is this one, 5 cos x minus 3 sin x. Okay, if you see and cancel this term, cancel with this one, and this term cancel with this one. Okay, and finally you are getting what? 0. You are getting what? 0. That means d2y upon dx2 plus y is equal to what? 0. That means what? When left hand side is equal to what? Right hand side. So finally we can write, therefore d2y upon dx2 plus y is equal to 0. Hence proved. So you can write here equal to right hand side. Okay, equal to what? Right hand side. And then finally write this is equal to what? 0. I hope that you understand this particular question. Second question of the class, and you see this is a very interesting question, and in this question you see it is given that y equal to a cos log x plus b sin log x, and you are to show that x square y2 plus x y1 plus y equal to 0. y2 means what? Second order derivative. y1 means what? First order derivative. What is a and b? A and b are arbitrary constant. Arbitrary constant means a can take any constant, like suppose a can be 1 or 2 or 3 or half, whatever भी, कोई भी हो सकता है, और b भी ऐसा कुछ भी constant value हो सकता है. Arbitrary means what? It can take any constant value. Okay, so sometimes in your equation it is suppose given by suppose a equal to 3 and b equal to what? 4. Your answer will be what? Same. Result same आएगा. ओके, इफ सपोज ए इक्वल टू -1 एंड बी इक्वल टू सपोज 5, तो आप डेरिवेटिव करेंगे तो वो रिजल्ट मिलेगी. ठीक है, दैट्स वाई ए एंड बी आर व्हाट? आर्बिट्ररी कांस्टेंट. ओके, सो विद दिस कंडीशन वी आर गोइंग टू प्रूव दैट दिस रिजल्ट. ओके, एंड इन द रिजल्ट यू सी, इन योर रिजल्ट यू सी देयर इज नथिंग कॉस और लॉग और ए एंड बी, कुछ नहीं है. तो ये सारी चीज़ को क्या करेंगे हम लोग? रिमूव करेंगे, एंड देन फाइनली वी गेट द पर्टिकुलर रिजल्ट. ओके, थैंक यू. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. So given condition से शुरू कर दे. Given is what? y equal to a cos log x plus b sin log x. This is our given condition. This is number relation number 1. Okay, so we derivative once, that is y1 is equal to, y1 means what? d dx. A is bar d dx of what? Cos log x. y1 मीन्स वन, दोनों साइड में डी डी एक्स लेंगे. ठीक है, प्लस
b इज कांस्टेंट बाहर रहेगा, डी डी एक्स ऑफ sin log x. Okay, so in this type of question again we are going to use what? Chain rule. This is your y1 a into डी डी एक्स ऑफ कॉस का पहले काम करें. कस के अंदर जो है log x को हम x ले लेंगे. If you suppose this is x, it will be convert into cos x and डी डी एक्स ऑफ cos x is equal to what? माइनस sin x. तो इसमें एक माइनस आएगा, माइनस sin log x होगा. ठीक है, लेकिन ये log x को हमने सपोज किया दिस log x एंड x दोनों क्या अलग है, तो उसका फिर डेरिवेटिव करो. डी डी एक्स ऑफ log x क्या होगा? डायरेक्ट करो, 1/x. लिखने का ज़रूरत नहीं. यहाँ में भी सेम प्रोसीड्यूर, पहले साइन का काम होगा. अंदर के जो फंक्शन है, इफ़ यू टेक दिस इज x, साइन x में कन्वर्ट होगा. डी डी एक्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू व्हाट? cos x. सो इट विल बी cos log x. ठीक है, फिर log x को डेरिवेटिव करो, क्या होगा? 1/x होगा. So we get this particular expression. Now 1/x is there, 1/x is there. You take 1/x common, 1/x कॉमन आ जाएगी और फिर ये 1/x को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. मीन्स हम क्या करेंगे, इसमें दोनों साइड से x से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें x/1 होगा, इस x इसमें x मल्टीप्लाई कर दो, x 1/x कैंसिल होगा, x एंड 1/x कैंसिल हो जाएगा. तो x/1 इज इक्वल टू माइनस a साइन log x प्लस b cos log x. ये एक्सप्रेशन हमें मिलेगी. ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन मिल गया उसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे. अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? x. तो उसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? डी डी एक्स ऑफ x/1 होगा एंड राइट हैंड साइड क्या होगा? माइनस a इंटू डी डी एक्स ऑफ sin log x प्लस b इंटू डी डी एक्स ऑफ cos log x. ओके, तो सेम प्रोसीड्यूर हम अप्लाई करेंगे, चेन रूल जैसे किया था, सेम टाइप ऑफ एक्सप्रेशन विल डू. ओके, नाउ इसमें क्या करेंगे, इस फंक्शन में देखो देयर आर टू फंक्शन u, दिस इज b. ओके, सो प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे. प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे तो क्या होगा? डी डी एक्स ऑफ x मीन्स x इंटू डी डी एक्स ऑफ y1. डी डी एक्स ऑफ y1 क्या होता है? y2 प्लस y1 इंटू डी डी एक्स ऑफ x क्या होगा? 1 होगा. तो y1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? y1 होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. आप कर सकते हैं आराम से. इसमें अगर डेरिवेटिव करेंगे, सेम में हमने डेरिवेटिव किया था साइन के, पहले करेंगे तो क्या होगा? ये तो है बाहर, साइन का डेरिवेटिव क्या है? cos log x होगा एंड फिर log x का डेरिवेटिव विल बी 1/x. उसमें क्या होगा? माइनस आएगी. cos का डेरिवेटिव क्या है? माइनस b इंटू कोसाइन log x इंटू क्या होगा? 1/x होगा. अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पार्ट. साइन का डेरिवेटिव क्या है? cos होगा, log x का डेरिवेटिव 1/x. cos का डेरिवेटिव क्या है? माइनस साइन होगा, फिर log x का डेरिवेटिव क्या है? 1/x. अभी 1/x है, फिर x से मल्टीप्लाई करो. और एम इज टू व्हाट? ये जो है 1/x है उसको कैंसिल करें. तो फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, तो क्या होगा? x² y2 प्लस x/y1 एंड इस साइड में क्या होगा? माइनस दोनों में है, माइनस कॉमन ले लो एंड इफ यू मल्टीप्लाई बाय x देन 1/x एंड x कैंसिल, इट विल बी a cos log x प्लस b sin log x. Okay, and this particular expression becomes what? x² y2 plus x/y1 minus this is your given expression, this is your y. In how to get? using the relation number what? 1. अगर रिलेशन 1 यूज़ करेंगे तो रिलेशन 1 से आपको ये रिजल्ट मिलेगी एंड दिस रिजल्ट इज इक्वल टू व्हाट? y. एंड फाइनली यू आर गेटिंग x² y2 plus x/y1 plus y equal to 0, which is your final result. You are going to prove it. Okay, so this is very interesting question, and these are called differential equation. In latter part, whenever you get the differential equation, then this type of expression related to the differential coefficient are called what? Differential equation. Okay, so very nice question and important question for you. And if a and b are replaced by any constant, then also what happen? You will get the same result. Okay,
So here A and B are what? Arbitrary constant. So I have solved 2 questions today in your class. I hope that you understand. Few questions will be given as a homework. Try yourself to solve these questions. Then your capacity building will be there in this particular chapter. Okay. Thank you very much.